Agarose gel electrophoresis in the presence of glyoxal इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जिन बफर्स की, रिएजेंट्स की या सप्लाइज की हमें ज़रूरत पेश आएगी, अब हम उनके हवाले से बात करेंगे। चूँकि हमने हमारे पास जो सैंपल है दैट कंटेन्स आरएनए, सो वी हैव टू मेक इट श्योर दैट all the buffers, all the reagents which we are going to use should be RNase free. तो इसके लिए सबसे easiest way और the important note जिसे कहते हैं ज़रूरी नोट यही है कि जब भी RNA से रिलेटेड कोई भी बफर तैयार किया जाए या कोई भी reagent तैयार किया जाए वो DEPC treated water के साथ तैयार किया जाए। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर की हमें ज़रूरत पेश आएगी। वी आर गोइंग टू मेक 10x BPTE इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर। अगर इस स्लाइड में देखें हमारे पास एक रेसिपी है, एक मोलर कंसनट्रेशन के बारे में कुछ डिटेल्स है। हमें इसमें पाइप्स, बेस ट्रेस, EDTA की ज़रूरत पेश आएगी एट डिफरेंट मोलर कंसनट्रेशंस and the pH should be approximately 6.5. How to make this buffer? The 10x buffer can be made by taking 3 grams of pipe, 6 grams of bis and trace, 2 milliliter of 0.5 molar EDTA at pH 8, and the water volume should be up to 90 milliliter. Then we can add DEPC in it with a final concentration of 0.1% for 1 hour at 37 degrees centigrade. ये जो addition of DEPC है that is going to inactivate any RNases if they are present in this particular buffer. And if we want to make larger volumes, so the amounts of these salts can be adjusted accordingly. फिर हमें DMSO की ज़रूरत पेश आएगी जो कि कमर्शली अवेलेबल होता है। DMSO की वेरिएबल टाइप्स हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी लेवल। RNA स्टडी के लिए वी शुड यूज़ हाईली प्योरीफाइड DMSO और वी कैन से the HPLC grade or better type of DMSO. To trace the RNA samples during gel electrophoresis, we need a gel loading buffer which is again available commercially as RNA gel loading buffer or loading dye as it can be seen in this picture. The glyoxal, the denaturing reagent, it is available from the commercial stocks as 40% और 6 मोलर सोल्यूशन। इसकी वेरियस हाइड्रेटेड फॉर्म्स आती हैं और उसके अलावा अगर हम इसको देखें तो इसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं विच कैन डिग्रेड दी DNA। लाइक फॉर्मिक एसिड की बात कर लें, ग्लायोक्सिलिक एसिड की बात कर लें, दीज आर दी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द glyoxal. So these should be removed or these should be avoided before the glyoxal is going to be used for RNA denaturation. Glyoxal reaction mixture बनाने के लिए we need DMSO, the HPLC grade, deionized glyoxal, BTE electrophoresis buffer जो हमने start पे जिसके बारे में बात की, then we need the glycerol and ethidium bromide. Glycerol से हम जानते हैं viscosity of the solution is going to be changed and it will help the RNA sample to settle in the well of the gel during electrophoresis. Once we made this glyoxal reaction mixture, then it is advised to make small liquids of 1 milliliter or 500 microliter and store them at minus 70 degrees centigrade and use as required. Then comes the types of gels. We are going to use agarose gel. जैसा कि हमने DNA के लिए agarose gel use की थी, the same gel is going to be used. The percentage needs to be decided on the basis of size of RNA molecule under study or which we are looking forward. For that purpose, gel casting tray is there. We are going to take the gel as described earlier कि एक particular volume में particular amount of agarose is dissolved और उसके बाद इसको कास्ट किया जाता है बेंच पे, आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। और उसमें हमने जो वेल्स के लिए कॉम्ब यूज़ करनी है, हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जितने हमारे RNA सैम्पल्स हैं जो हम स्टडी करना चाहते हैं उनसे 4 वेल्स हमें एक्सेस में छोड़ने हैं, बिकॉज जो 4 वेल्स हैं जेल में दे विल बी यूज्ड फॉर मार्कर on both the sides, the RNA size marker. So we need to be very careful while studying
how many samples we have, how many wells we should have in the gel during the gel casting. Percentage 1.5% gel is normally used, but the percentage can be changed if the size of RNA is larger. We can use 1 or 1.2% gel. RNA sample, whether this is total RNA or this is poly-A-RNA, we can use them in a volume of 1 to 2 microliter, and the concentration should be 10 microgram. The equivalent amount of RNA samples to analyze are removed from the storage and are processed. इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हमारी RNA की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होती है, या फिर हमारे RNA सैम्पल्स में SDS या सॉल्ट आइंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक स्ट्रीक अपीयरेंस दे सकते हैं. Size marker as required. We can use the size marker depending upon what is the size of our required the RNA molecule to study. Then special equipment में horizontal gel electrophoresis chamber is used, ruler transparent if required. If you want to measure the distance traveled by a particular RNA band, then water bath is going to be required, which is preset at 55 degrees centigrade for some incubation steps.